Assalamualaikum everybody and welcome back to another episode of Dear Sister by Happy Chirp. आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो एक्चुअली आप लोगों ने ही सजेस्ट किया हमें बहुत ज़्यादा. इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो ये कमेंट आता था कि प्लीज़ टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड स्टोरीज एंड थिंग्स दैट यू एक्सपीरियंस्ड बैक देन. सो टुडे वी हैव विद अस इज़ा फातिमा, योर रेगुलर को-होस्ट. यस, एंड सानिया फारूकी. हाय. कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक. वेरी ग्रेट. ग्रेट. चलो लेट्स डाइव राइट इनटू इट. तो पहले इज़ा आप अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा बताएं. एंड आई थिंक कि this is going to be very interesting because we're all three of us were very different. We're very different. You know? Me being the only child and then you coming from abroad and then you being an army brat, Yeah. Sanya, right? So I think this is going to be a very interesting conversation. So Izza, चलें आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा. I was born and I grew up in the UAE. I'm currently 22 and majority of my life was still spent in UAE. So I shifted back to Pakistan in 2013 और उससे पहले बस एक ही बार पाकिस्तान आई थी. So in 2010. तो अंग्रेज़ बच्चा हमेशा yes. But I did study in like an Urdu medium school there in UAE. So इस वजह से इतना ज़्यादा. Why आपकी उर्दू is fine because I always wondered जो बाहर के बच्चे आते they have an accent attached, you know, लेकिन आपका नहीं था. So yeah. So 2013 and onwards भी like that was a time when I was really like starting to know people, अच्छा starting to identify कि अच्छा दुनिया क्या है. तो उस वक्त मुझे पता चला कि you know what, यहाँ पर दुनिया और है. And the place that I grew up in, that was completely different. तो can you explain how? Like how was it different? Everything like in kind of minute ही इतना वो था ना, that because all the small things make the greater picture. तो रिश्तेदार I'd say the presence of यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है रिश्तेदारों का. तो बहुत ज़्यादा है. ज़रूरत से ज़्यादा या लेकिन वहाँ पर कुछ फैमिलीज़ के होते हैं कि अच्छा सारे ही आधी फैमिली बाहर सिचुएटेड होती है, लेकिन हमारे केस में वी वर द ओनली वन who were situated over there, like मेरे अब्बू और अम्मी वाली साइड से, दोनों साइड से. तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते थे वहाँ पर ज़्यादा बातें बिकॉज एक पाकिस्तानी काइंड ऑफ आपकी कम्युनिटी बन गई थी. लेकिन सम मेजर थिंग्स जो मैं एक्चुअली लोगों के साथ क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी व्हेन आई केम बैक हियर, और लोगों के आपस में कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं. अच्छा, दे आर टॉकिंग अबाउट कजन्स, दे आर टॉकिंग अबाउट बचपन में हम ये खाते थे, दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट एक्सपीरियंसेस, दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट कल्चर. And that is something which was not relatable to me at all. तो आप लोग क्या करते थे? Like I remember कि जब हमें कुछ करना होता था तो हम लोग ऐसे स्ट्रीट में निकल जाएंगे, गेम्स खेलेंगे, you know, random neighbors के साथ, बच्चों के साथ. And what did you guys do? Like क्या होता था? मतलब क्या आप लोग की लेयर एक्टिविटी क्या होती थी? तो I grew up in UAE. तो वहाँ पर you like high end वाले लोग होते थे, you know, you had अच्छा. okay, नहीं, like I'm telling you how ठीक है यार, is that like you peasants? Whatever. Like I'm rich people. नहीं, तो like there was really like we used to feel कि अच्छा, you know, they belong to a different class, like we aren't someone who can like relate to them. तो उसकी वजह से I really believe कि like मेरे जो parents है, they used to be don't go outside because they used to shelter us कि यार वो किस तरह के लोग हैं. First they were Arabs, सिर्फ Arabs नहीं, like Egyptian भी थे, कुछ आध Indian भी थे, लेकिन Indian से तो बिल्कुल भी कोई भी interaction नहीं होती थी. तो the people over there वो काफ़ी discriminatory थे. तो एट द एंड पाकिस्तानी इंडियन के साथ ही खेल रहा होता था, ठीक है, इजिप्शियन को काइंड ऑफ कोई नहीं लिफ्ट करा रहा होता था, एंड अरब्स जो हैं ये आपस में ही खेल रहे होते थे. एंड लाइक I've almost had no experience with street playing with kids and all that. लेकिन एक मुझे याद है कि वंस मेरी एक बॉल गिर गई थी, लाइक आई हैड दिस स्मॉल बाउंसिंग बॉल जो कि गिर गई थी नीचे, और मैंने कहा कि ओके आई शुड गो, ओ द आर्किटेक्चर ओवर देयर इज़ डिफरेंट, लाइक यहाँ पर बिल्कुल ही घर एक दूसरे के साथ मिले हैं. आई रिमेंबर व्हेन वी वर कमिंग हियर, तो मेरे अब्बू ने कहा था कि यू नो व्हाट, पाकिस्तान में घर बिल्कुल पास होते हैं, सो यू नो व्हाट, everything's very connected in Pakistan. Yeah, you know, from the it is families very to our connected. houses to literally everything. like legit everything. वहाँ पर हमारे पास घरों के दरमियान
कोई 5 फुट मिनिमम हमारे पास स्पेस होती थी. ओके वाओ. Wow. या लाइक यहाँ पे तो we're so connected कि हमारे बिल्कुल. रिश्तेदार भी ना सारे एक ही घर में होते हैं. ये joint family system. We're that connected या guys. तो लाइक हाँ. घर भी डिस्कनेक्टेड, बहुत डिस्कनेक्टेड. तो ऑडिटरी या फिर टैंजिबली बस फिजिकली कनेक्टेड ही नहीं थे ना बिल्कुल भी. एंड वी यूज टू लिव इन विलास. लाइक वहाँ पर घर का भी कॉन्सेप्ट बहुत कम होता था. यहाँ पाकिस्तान में अपना घर होता था. वहाँ पर बिकॉज द रेट्स वर सो हाई, like almost nobody who was there who was not a local over there. ठीक है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे. तो आई मोस्टली पहले तो अपार्टमेंट्स में आई यूज टू लिव इन अपार्टमेंट्स, और लाइक पूरी बिल्डिंग होती थी ऑफ आई थिंक 13 floors. और देन वी शिफ्टेड टू विला होता है, उसमें लाइक 4 families शेयर अ हाउस. अच्छा. अलग अलग ही होता है, लाइक बीच में स्टेयरकेस होती है और फिर उसके बाद देयर आर लाइक डिफरेंट फ्लैट्स. सो दैट वाज इन अनदर सिटी. लाइक आई ग्रू अप इन अबू धाबी और फिर बाद में हम अलेन शिफ्ट हो गए थे. हाँ, तो आई वाज कमिंग बैक टू दैट स्टोरी कि मेरी बॉल नीचे गिर गई थी. सो वो उस स्पेस में गई थी जहाँ पे लाइक 5 फुट, लाइक वो जगह किसी की नहीं होती थी, वो बेसिकली गवर्नमेंट की होती थी. तो आई वेंट डाउन स्टेयर्स टू गेट दैट बॉल एंड देयर वाज दिस गर्ल जो कि बिल्कुल आई थिंक वो नेक्स्ट घर की थी. एंड वो मेरे पीछे आई एंड शी वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग हियर. शी वाज अरेबिक एंड मैंने कहा कि आई एम जस्ट गेटिंग दिस बॉल, लाइक दिस इज माइन. सो ये गिर गया था, सो आई एम गेटिंग दिस. एंड शी वाज लाइक no, like you're not allowed to come into this place. And I was मैं शायद कोई 7 साल की थी, like hardly 7 साल की थी. And I was so confused कि why, मतलब ये तो ना तुम्हारा घर है या ना ये मेरा घर है. और कहती you know what, like I'll call my mother right now. And she actually उसने सारा वो reenactment करके बताया. She'll literally slap you on your face. I'm not kidding. It's just so weird to me. By the way, it's not only kids there, it's kids over here as well. अब जब मैं कभी conversation सुनती हूँ ना बाहर जो खेल रहे होते हैं बच्चे ना, they're just out for each other all the time. I wonder They are, why. yeah. And honestly, this is a kind of bullying. This is bullying, yeah. And they used to bully at such a small age. This is like एक किस्सा जो मुझे याद है जिसमें मैं actually गई हूँ. And मैं सिर्फ एक बॉल पकड़ने गई हूँ. आई नेवर काइंड ऑफ इंटरेक्टिव नेवर प्लेड विद देम बिकॉज माई पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ. और फिर उस वक्त लाइक एट द एज ऑफ लाइक 7 मुझे समझ आ रही थी कि maybe this is why, because they are very rude. This explains why your parents yeah were my like parents are not allowing because उनको पता है कि you know what, if my kid will go outside they will face this kind of bullying or this kind of discrimination. लेकिन इसके अलावा it was also very nice growing up in such a क्या कहूँ in a sound environment. Because यहाँ something which जो कि मुझे बहुत बग करती है. We did not grow up in a sound. I agree. like growing up I did not know कि अच्छा government officials कौन है. Like this is something I did not know at all कि अच्छा who is the वहाँ पे तो प्रेसिडेंट वगैरह नहीं होते वहाँ पे तो क्राउन प्रिंस इस तरह के होते हैं. बच्चे को अब तो स्पेशली पता है. अब तो या वहाँ पर किंग और प्रिंस होते थे. एंड लाइक आई हार्डली इवन केयर्ड कि कौन होता था. बिकॉज यू नो अपनी ज़िंदगी मस्त, लाइफ चिल, एवरीथिंग चिल. ठीक है, लाइक हमारी ज़िंदगी में मसले क्या होते थे कि अच्छा फाइनेंसेस, मेजरली फाइनेंसेस ही होते थे. अच्छा पानी आ रहा है, गैस आ रहा है, बिजली भी आ रही है. वही टिपिकल इश्यूज जो मोस्टली यहाँ पे नहीं, गैस वहाँ पर आ रही है, मतलब उसका तो कोई मसला ही नहीं होता था ना. वो तो यहाँ पे मसला होता है. हाँ, यहाँ पर मसला. सॉरी. हाँ, अभी उन्होंने आपको बताया कि पेजेंट प्लीज स्टे क्वाइट. तो और रश वगैरह कभी नहीं मसला होता था बिकॉज ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था मसला. यार मुझे ये बताइए क्या वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है. लाइक I remember like we were just another family. ठीक है, struggling over there because taxes का भी इतना ज़्यादा नहीं होता था वैसे. it was just overall just महंगाई ही ज़्यादा थी. और फिर हम हर चीज़ अब like our father used to say कि you know what, ये तो पाकिस्तान में फ़लाँ चीज़ like इतनी सस्ती होती है तो यहाँ पर ये इतनी महंगी क्यों. अच्छा ये बहुत महंगाई है वगैरह. तो हमारे honestly इतने मसाइल नहीं होते थे. but then come in here all of that changed ना. एक पता चला I was about to ask you कि like from there to here when you were shifted, तो वो cultural shift क्या था? Like how was it like to really you know be in Pakistan all of a sudden? कैसा था? 2010 में as I said कि I once visited this place.
तो उस वक्त मुझे इतना Why did you visit back then? जस्ट अ विजिट कि अच्छा भाई लाइक आवर फैमिली लिव्स ओवर देयर, हमने कभी भी लाइक विजिट नहीं किया ना, तो कभी रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हुई, तो इट वाज जस्ट अ फैमिली समर वेकेशन या हियर इन पाकिस्तान, तो तब हम सब आए थे. सो कमिंग ओवर हियर मुझे इतना ऑनेस्टली मुझे शिफ्ट चेंज नहीं मुझे फील नहीं हुआ. अच्छा, बिकॉज पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी कि वहाँ पर जो मेरे दोस्त थे वो सारे पाकिस्तानी थे, तो फिर यहाँ आए तो एक मुझे अच्छा पाकिस्तानी लोग इर्द गिर्द नज़र आ रहे, और फिर रिश्तेदार शुरू में ऑब्वियसली दैट्स हाउ इट गोज़ कि रिश्तेदार शुरू में अच्छे होते हैं, वो अलग बात है. ओवर द इयर्स व्हाट हैपन्स, तो एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ फाइन. मुझे लगता था कि अच्छा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. बट then recognizing everything, because I was in 8th class when I came over here, and because मैं उस तरह के बहुत chill तरह के environment में I grew up, मैं उस तरह से तेज़ या चालाक नहीं थी. तो जब मैं यहाँ आई मुझे The kids here are pretty street smart as they are well. very right? smart. हाँ, Very and smart. you not even going till नीचे वो 5 फुट वाली जगह तक, I feel like you would have not been smart at all. लाइक हम निकलते थे, हमारी फैमिली, अगर मैं घर से निकलती थी ना, गाड़ी में बैठती थी, स्कूल जाती थी, अच्छा वापस आ रही हूँ, अच्छा फैमिली हमारी आउटिंग हो रही है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा. या एग्जैक्टली. ये बाकी चीज़ें तो अंदर होती का ही बच्चा as we say. नहीं. या बट आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड वैसे कि अच्छा बाहर क्या हो रहा है, लाइक हाउ वुड इट बी. आई वाज एक्चुअली आल्सो एक्साइटेड बिकॉज आई न्यू कि अच्छा पाकिस्तान में ये वाली चीज़ें नहीं, पाकिस्तान में आप बाहर जाते हैं. Now Izza is out all the time, guys. Like Izza सुबह निकलती है 9 बजे अपनी गाड़ी पे, 9 बजे से पहले. 9 बजे से पहले. And then कितने बजे घर जाती हैं आप? लाइक घर पहुंच रही होती कोई 9 और 10 के दरमियान ही. लाइक आई लीव होम बिफोर 8 and then I reach home. It's just how life is. So I think I'm making up for all the time that I wasn't able to. So I'm fine with and that. if it's affecting you positively, then I think it's good. Yeah, always positive. That's nice. तो yeah, उस वजह से मैं पाकिस्तान आने के लिए एक्साइटेड भी थी कि वो एक अलग दुनिया होगी, वहाँ पर ओपननेस होगी. एंड बिकॉज मेरे लाइक फैमिली में से सब नहीं आ रहे थे, लाइक माई फादर स्टेड बैक देयर क्योंकि ही हैड द जॉब, और एंड वी शिफ्टेड ओवर हियर बिकॉज मेरे बड़े बहन भाई दे हैड टू स्टार्ट विद देयर यूनिवर्सिटीज़. तो वहाँ सो लाइक द एजुकेशन सिस्टम, आपको उसमें कोई चेंज नज़र आया? लाइक इट कैन बी literally from the education to जिस तरह के दोस्त आपके बने, and how they were with you, were they rude, did they bully you here as well, या वहाँ पे ज़्यादा होता था या क्या था? अच्छा, दोस्त जो हैं मेरे एक्चुअली उन्होंने ना यहाँ पर बुली किए ना वहाँ पर बुली किया. लाइक द ओनली पीपल, द ओनली चिल्ड्रन जिन्होंने बुली किया वो थोड़े बहुत वो जो स्ट्रीट में जो इंसिडेंट्स हुए थे उससे हुए थे. और एजुकेशन वॉज ऑलमोस्ट द सेम बिकॉज मैंने सारा मतलब आई स्टार्टेड स्कूल फ्रॉम 1 क्लास, उससे पहले KG प्रेप वो सारी नहीं पढ़ी थी. तो आई डिड दैट फ्रॉम अ पाकिस्तानी स्कूल, और 8 क्लास तक मैं उसी स्कूल में रही थी. एंड वहाँ पर आइड से 99%, क्योंकि एक बार हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी हु बिलोंग फ्रॉम बांग्लादेश, तो वो उर्दू ही बोलती थी, एंड उसको सारा सीखना पड़ा था उर्दू कैसे लिखते हैं. बट फॉर सम रीज़न बिकॉज इट वाज अ पाकिस्तानी स्कूल और मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो हर पेरेंट्स प्रेफर्ड कि आप इधर जाओ, क्योंकि बंगाली स्कूल कोई नहीं था. इसके अलावा इंडियन स्कूल था एक, और फिर अराबिक वगैरह स्कूल्स थे जहाँ पे लाइक मिक्सड कल्चर होते थे. तो और हमारा जो स्कूल था दैट वाज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन UAE. तो again school system was not too different, was almost the same क्योंकि federal board वहाँ भी होता था. तो my sisters and like my siblings, yeah, federal board ही होता था. Like the thing about federal board is that it is international. बाकी में से कोई नहीं है. I did not know that. Okay, wow. तो आप लोगों आपने A levels किया? Federal board. मैंने A levels की. अच्छा, तो वो वहाँ इवन आप उनकी वेबसाइट पर भी जाओ ना, तो दे हैव ऑल दीज फ्लैग्स दिखाने के लिए कि अच्छा हाँ इस मुल्क में इस मुल्क में हाँ अपनी टेंशन इतनी हाई खत्म कर लिए काफ़ी है. हाँ. तो वहाँ पर फेडरल बोर्ड होता था, एंड फेडरल बोर्ड इज़ ऑल्सो इन बाकी गल्फ कंट्रीज टू. अच्छा. तो दैट्स एंड आई थिंक वो फिर US में भी किसी हद तक है, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन इसके अलावा लाइक मिडल ईस्ट के अलावा भी वो बाकी ममालिक में है. दैट्स द थिंग. तो education was almost the same, like I would say same. लेकिन एक जो difference लगा था
when I came here to Pakistan, that was कि जो लड़कियां हैं, they were quite different because they were so smart with their conversations, with their topics of conversations, और जितनी like there was so much over here now, like वहाँ पर हमारे पास एक ही क्लास में हमारे पास बलोची भी होती थी, पठान भी होती थी, सिंधी भी होती थी, जब पंजाब, हाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी, तो सब ना टोन्ड डाउन से एक दूसरे के बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंट कल्चर्स. और फिर यहाँ पर अच्छा सारे ही पंजाबी, अच्छा शायद कोई आपस में पंजाबी में बात करो. इट वाज इंटरेस्टिंग, बट एंड इट अल्हम्दुलिल्लाह से इतना टाइम मुझे नहीं लगा टू सेटल डाउन इन इट. लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक, बिकॉज अभी कॉग्निटिव एबिलिटी लाइक आई है ना मुझ में, लाइक इन द रिसेंट लाइक 5 years, तब मुझे समझ आ रहा है कि यू नो व्हाट, why is Pakistan a third world country? क्योंकि उस वक्त at the age of 13 मुझे इतना नहीं नज़र आता था. मैं कहती थी अच्छा वहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ होती थी, अच्छा यहाँ पर मेहरान है, what's different in that? लेकिन seen everything, and एक बच्चा जिस तरह बात कर रहा होता है, एक बच्चे को गवर्नमेंट का कैसे, पॉलिटिकल सिचुएशन का सारा कैसे पता होता है, एंड द फैक्ट दैट हाउ वो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, देयर सिंगल डिसीजंस जो हो रही होती है, एंड स्पेशली बिकॉज वी लिव इन लाइक पिंडी इस्लामाबाद, तो यहाँ पर तो हर चीज़ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है ना. प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अच्छा डी चौक ब्लॉक हो रहा है, यूनिवर्सिटी से जल्दी छुट्टी हो रही है, पता नहीं चल रहा, लाइक एवरीथिंग इज़ सो मिक्सड अप दैट अभी पता चल रहा है कि अच्छा व्हाट इज़ पाकिस्तान रियली अबाउट. हाँ, सो लाइक यू मेंशन कि वहाँ पे इतने ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं थे एंड यू गाइज वर अलोन. सो कमिंग फ्रॉम दैट टू कमिंग टू पाकिस्तान जहाँ पे लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स ऑल अराउंड यू एंड ऑल द टाइम, तो हाउ इज़ दैट चेंज लाइक फॉर यू? आई एम एक्चुअली स्टिल क्या कहते हैं उसको, सेटलिंग इन टू दैट, क्योंकि लाइक वी बिलोंग फ्रॉम गुजरात, तो हमारे अभी तक मेजरली लाइक आधी फैमिली तो गुजरात में ही है. सम आर अब्रॉड इन अदर कंट्रीज़ लाइक अदर देन यूई, और बहुत कम है, लाइक शायद 5-6 फैमिलीज़ हैं जो कि यहाँ पर हैं पिंडी इस्लामाबाद में. और वी कोई किस साइड पर रह रहा है, कोई किस साइड पर रह रहा है, लाइक वी लिव टू फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ आपको? डिफरेंस तो फील हुआ है, वैसे डिफरेंस तो बहुत फील हुआ है, बिकॉज देयर वी वर सो इंडिपेंडेंट, वी डिड नॉट हैव टू काउंट ऑन एनी बडी ना उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से. बट देन अगेन सिचुएशंस ही ऐसी थी ना, लाइक यू वर रिलैक्सड इन सो मैनी मैनर्स दैट आपको ऑनेस्टली किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. लाइक आपको ये टेंशन नहीं होती थी अच्छा पानी आ रहा है हमारे घर में, इट्स नॉट कि अच्छा आपको जाके फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भरना पड़ा है. लेकिन यहाँ पर अगर I don't think that's a relative problem. I think that's a Pakistani problem. नहीं कि पानी का मसला problem. नहीं, that एक वो मसला है कि अच्छा पानी नहीं है हमारे पास, ठीक है, लाइक मेरे घर पे इफ़ नो वन हु इज़ करेंटली एट माई होम, उनमें से किसी को भी गाड़ी नहीं चलानी आती, तो अच्छा दे विल नीड समवन, कोई रिलेटिव वगैरह हु दे कैन हिट अप एंड दे कैन से कि यू नो व्हाट हमारे घर में ये मसला है, या एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज क्वाइट हद तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एंड हाउ द सिस्टम्स आर वर्किंग ओवर हियर. तो एक वो चीज़ रियलाइज़ हुई. लेकिन ख़ानदान एंड रिश्तेदार ये if used wisely they are and if they are wise even, so they are very big of a blessing. Like true. Like मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि oh God रिश्तेदार, because I have had that experience of not having these people around and the difficulties and the challenges kind of we had to face, and एक loneliness आपको feel होती है कि at the end यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है. अच्छा family friends हैं लेकिन ये अपने नहीं है, वो अपनाइयत वाली feeling ना, that support that you have just if उनकी presence है same country same town में, तो that is different. That is a blessing. So I would classify that having them here is a blessing. And then one step ahead is that अगर वो आपके घर के पास रहते हैं तो वो तो मज़ीद ही blessing है. तो I have like recently I shifted houses, so I am now it's very different for some people though. For some people it's a blessing, for some it's a curse. It is. And that is completely justified. सानिया के लिए कर्स है ना? Curse नहीं, but let's see. You continue. So like I said, I recently shift houses, so now I'm living closer to a relative, and that is so fun. Like that is so much fun. That's so sweet. I feel like it's I'm so making up for the here के किसी के इतने अच्छे रिलेशन, माशाल्लाह कि किसी के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, because
most of what I get to hear is कि oh no, like you know क्यों रह रहे हैं, क्यों ये क्या scene है, and they're not happy with it, right? They're not happy. So it's nice, mashallah, that you have a family that's very supportive and that makes you feel this way. Yeah. कि you're here and you're sitting and you're telling everybody कि यार होने चाहिए relatives इस तरह जो आपके आसपास हैं, right? Yeah. So anyway, let's move on. Let's move towards Sanya's story. Okay. So for people who don't know, Sanya is an army brat and I've never had a friend जो कि army brat हो, ठीक है? So I've always been very curious कि यार कहते हैं ना कि ये लोग बहुत बिगड़े हुए होते हैं और बहुत ये लोग pampered होते हैं and stuff. yeah. So I would really want to know कि is that true? Number one, and how was your life growing up? Okay, so मेरा जो कह लें प्लस पॉइंट कह लें कि या नेगेटिव पॉइंट कह लें, आई डोंट नो, बट व्हेन आई वाज बोर्न इन 98, आई एम 23, तो उसके बाद 2005 में माय फादर गॉट रिटायर्ड, जहाँ तक मुझे याद है. तो आर्मी जो था वहाँ पे, ठीक है, दैट आर्मी वाला सिस्टम तो वहाँ पे थोड़ा कम हो गया था, बट इवेंचुअली इट स्टेज विद यू फॉर योर इंटायर लाइफ. तो उसके बाद मेरा जो चाइल्डहुड है, मैंने कोई इतनी वो जैसा कहते हैं ना टिपिकल आर्मी ब्रैट्स के, हमने ये भी जगह देखी है पाकिस्तान की, वो भी देखी है. नो, मैंने बहुत बचपन में अपनी कह लो किंडरगार्टन मैंने शायद पेशावर APS से किया था. उसके बाद फिर हम लोग गुजरांवाला शिफ्ट हो गए. पैदा मैं खारिया में हुई थी, फिर पेशावर में मैंने स्टार्टिंग की पढ़ाई की और गुजरांवाला में शिफ्ट हुए, और उसके बाद से हम गुजरांवाला में ही हैं, मतलब क्योंकि बाबा की रिटायरमेंट भी गुजरांवाला में ही हुई. तो is it the Peshawar that the APS Peshawar which got attacked, like wahi? No, that is actually the boys branch जो अटैक हुआ ना. Okay, सही वो बॉयज़ वाला, मेरा तो टोटली डिफरेंट था. ठीक, okay. तो उसके बाद इन 2009 माई चाइल्डहुड वॉज लाइक दिस के येस आई वॉज वेरी पैम्पर्ड, आई स्टिल एम वेरी पैम्पर्ड बिकॉज आई एम द लास्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली एंड आई एम एक्सट्रीमली यू नो, मेरे बारे में मेरी फैमिली, माई ब्रदर्स, माई मदर, दे आर एक्सट्रीमली पोजेसिव. इवन दो कभी कभी एक ऐसा पॉइंट होता था दैट आई यूज्ड टू गेट सो इरिटेटेड कि बस करते हैं लाइक व्हाई आर यू गाइस बीइंग लाइक दिस, बट alhamdulillah for that. Like मेरी story सुना रही है. Then in my childhood was like this कि मैं बहुत बचपन से मेरे बहुत फ्रेंड्स थे. I was very social butterfly. मैं बाहर बहुत खेलती थी, पर ये obviously मगरिब की अज़ान से पहले घर आ जाती थी. And उसके बाद 2009 में I was in grade 4th I guess. I lost my dad because of cancer. तो उसके बाद ऑब्वियसली 2004 क्लास में आपकी क्या एज होती है, दैट इज़ योर चाइल्डहुड, राइट. तो मेरा चाइल्डहुड वहाँ से बेसिकली जो ग्रोइंग अप सिस्टम था, सारी स्टेजेस थी वो स्टार्टिंग, एंड आई थैंक माई मॉम for that, like she's a wonder woman and my brothers though, because उनका प्लस पॉइंट ये रहा जी, उनकी मेरे लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये रहा, बिकॉज मतलब वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी ना होने दी, तो दैट वाज लाइक वेरी स्वीट. और मेरे जो रिलेटिव्स वाली जो वर्दा बात कर रही है, I just want to add कि like आपने जो mention किया, you lost your dad and then your mom was your support. Like women are so strong. Like let's take a second to talk about the fact that how strong are women and what are they capable of. You know, like, my mom, she was like a typical housewife. उनको ये नहीं पता होता था कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है. But after my dad, how she raised me, my siblings, the way she cope up with her traumas, मतलब that is so beautiful. And now how she's strong is, मैं उनको देखती हूँ कहती मामा like how do you do this? कैसे कर लेते हैं? Exactly. Like I bet like हम में से like हम सब ही जब अपनी माँ को देखते हैं तो हम कहते हैं how are you so like I can relate to it in a sense कि जिस वक्त मेरे नाना अबू he passed away and I have seen till date माशाल्लाह my नानी do so much for the house. I mean मैं अपने ऊपर बाद में आऊँगी, आपसे हम पहले पूछेंगे, बट आई ग्रो अप इन अ फैमिली जहाँ पे पापा होते नहीं थे घर, बिकॉज वो पुलिस में थे, तो ही हैड टू मूव अराउंड एंड हमें इतना ज़्यादा उन्होंने मूव करने का कहा नहीं था बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन एंड स्टफ. तो ही वाज लाइक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक ही जगह पे रहो, वहीं पढ़ो, चलो, आई विल मूव एंड आई विल डू व्हाटएवर आई हैव टू. सो हमारा घर मेरी नानो संभालती होती थी, राइट. एंड देन वो तब से संभाल रही है मेरी मामा को, मेरी खाला को, जिस टाइम से वो नहीं है. ही वाज मतलब ही पास्ड अवे एंड उसके बाद से शी हैज बीन द मर्द ऑफ द फैमिली एज वेल. I can totally understand. Yeah, that's why I raised this point that women are very strong. Women are the wonder women, trust me. Yeah. फिर ये सीन था कि मामा ने ऑब्वियसली मेरे एक भाई पीएम में चले गए, एक अपनी हॉस्टल लाइफ गुजारने, तो इट वाज मतलब घर में भाइयों का रोल था, बट इट वाज नॉट दैट मच. और मेरी फैमिली में जो मेरे रिलेटिव्स हैं
उनमें they were not that much involved and they never did, to be really honest. But yes, I do like them, I do love them, and I do respect them. But there are some certain things and certain people that I just cannot like. Like I cannot digest that I can like them for several reasons. Okay. But the thing is कि the way my mother even dealt with them, scene ये था कि मेरे मामा पापा they were cousins. तो eventually मेरे जो relatives हैं उनकी involvement कुछ extra थी. The way she get out of all that stuff और उनके ऊपर बहुत सी बातें भी हुई. Obviously being a single mother, it's really tough. It's really hard. Yeah, it's and really hard. मेरा childhood was very, you can say, I used to think a lot. I used to write millions of diaries. And eventually मेरी कोई obviously friend नहीं, उस तरह close friend नहीं होता था. मामा से आप कितना को discuss कर लेते हो. तो I was And not everybody is comfortable in sharing their life. I mean, Exactly. आपकी जितनी भी close friend हो जाए, एंड दूसरा ज़रूरी नहीं आप होता शेयर है। करो भी ना तो आपको बहुत टाइम लगता है कि आपको ये सोचने में बहुत टाइम लग जाता है कि अगला बंदा आपके ही मेंटल स्टेबिलिटी के पास आके सोच रहा है कि नहीं. आप उस same level पे नहीं होते. Yeah, with some people. but- Even with your best friends at times, you can't Exactly. share certain And then things. at such a young age. Yeah. So maybe that's why I say that I'm emotionally, mentally a bit more mature as comparative to the kids of my age. Because I have seen a lot. Like, I have seen a lot. कहते हैं ना I have जो seen, बच्चे yeah. who go through all of this and all, they mature early because Yeah. they see a lot of stuff or they experience a lot of stuff very early in life, you know. एंड यू नो उसके बाद खैर मैं बड़ी हुई बचपन में. मेरी मामा ने जब मेरी सेकेंड ईयर हुई थी क्लियर, वो अगर ये पॉडकास्ट देखेंगी तो बहुत हंसेंगी इस बात पे. उन्होंने कहा था अगर तुम जहाँ पे भी फेल हुई मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है. Oh, something that I think all girls face No, is she कि just- फेल नहीं होना भाई. हाँ, और फिर मैं ऐसा फेल हुई कि मैं फेल हुई ही नहीं. और आज भी कहती है तुम तो फेल हुई ही नहीं. तुम यहाँ तक पहुँच गई हो. तो मतलब एक बहुत फिर एक अच्छे टाइम्स भी आए. देन यू नो माई ब्रदर्स गॉट बैक होम. They started dealing with entire घर और you know फिर वो back to वही वाली feelings. My brothers वो were like responsibilities. Yeah, लेने they तो were- आप लोग कितने siblings हो? 4. अच्छा, okay. They were like my fathers, to be really Yeah, honest. true. And मतलब they have been there every. आपका एज डिफरेंस उनके बहुत साथ different इतना था ना. It's बहुत ज़्यादा actually the difference है. age It's difference like अगर आप बता दें. Yeah, it's 10 years and 9 years. Wow. That's a lot of difference. That's a lot of cute. They would obviously treat you as their Yeah. baby. पर कभी कभी it was very irritating कि you are my siblings, please be my siblings. But eventually it got better. तो अब तो ये system है that my mother says this, that I'm more wise than my other siblings. So that's a plus point for me. Because मेरा childhood ऐसा ही था. मेरा childhood was more inclined towards friends. Because my friends were there. I used to go out with my friends because और कोई था नहीं ना उस time available नहीं था. Yeah. तो my friends were like everything for me. And what about आपके जो रिश्तेदार हैं वो गुजरांवाला में ही थे? मेरे जो पूरे बाबा की साइड है ददयाल जिसको कहते हैं, that is But in everyone cousin is in the marriages, town. like आपकी मामा की साइड और आपकी पापा की साइड is always the same. It's Like all the same, yeah, but it's always the same, but it's still not the same. Yeah, आप confused हो जाते हो, but yeah, I get what you're saying. And my mother is from Lahore, तो मेरे जितने भी नानों वाली साइड है that's in Lahore. तो मेरे जो एक्चुअली रिलेटिव्स है ना उसमें ऐसे जितने कोई वो नहीं है. मेरी नानू की डेथ हो गई भी. वन ऑफ माई रियली क्लोजेस्ट मामू ही इट वॉज 2008 से लेकर 2011-10 तक was very traumatic years of her life. We used to How old were you उस सब के बीच में? I don't remember my age that much, but yeah, मतलब max हाँ इतना ही, 10 to हाँ. 12 होते थे. तो I lost my नाना बू, उसके अगले साल I lost my खाला, उसके अगले साल I lost my मामू, then my So dad, much. and How then my would that dada have affected you? Oh my yeah, God. it was so traumatic. Even though I was very young, but I remember Losing like a loved lot of one just changes you. exactly, especially बचपन की मुझे 2-3 थोड़े बहुत इस तरह के वो याद हैं सीन वाकयास wow कि I was really close to my father and he was that kind of dad जो कि भाई सानू ने कहा है कि इस चीज़ के ऊपर हाथ रखनी है then you need to get that. He was like that. I was like really Full close. pampering. Yeah, full pampered, extremely pampered. And my mother tells me that my dad used to say this कि
your father asked to Allah कि please मुझे बेटी दीजिएगा जब मैं पैदा नहीं. So that was like so beautiful. So my childhood was You're very the like, only daughter? No, I have one elder sister though. But वो बहुत elder है. And she's married now. She's alhamdulillah happy, and she was never like, she was like my amma, you know. I think because you were the youngest, सबसे छोटी, तो और बहुत pampered, and you know होता है the baby of the house. Yeah, the baby of the the house, extreme basically. baby of the house, you can say. But that's a blessing to be honest. It is मैं तो also a कहूँगी blessing. मजा आता है आपको when you're that pampered, you know, because Yeah, but sometimes I think so that parents, they should let their kids be a bit, you know, independent for true some that. reason, because True. अब ऐसा होता है कि I'm so pampered ना कि मुझे कुछ चीज़ें सोचने में, कुछ चीज़ें करने में मैं बहुत सोचती हूँ कि am I doing this right? Am I doing that right? I totally agree with you, and I can relate to it because I'm still the only child. And I think people might be sick of listening to me इस बारे में, because मैंने इतनी बात कर ली है कि I'm the only child. But yes, what you are saying is true. I feel like because I was so pampered, आउट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स, वो होता था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, कि बहुत सारी चीज़ें इन लाइफ दैट आई ग्रू अप एंड आई वाज लाइक आई शुड हैव नोन दीज थिंग्स इफ आई वाज एक्सपोज्ड टू द सोसाइटी आउट देयर, इफ आई वेंट आउट देयर मोर देन आई डिड. आई थिंक सो आपको पता होता है फिर ज़्यादा, स्पेशली फॉर द parents who pamper their child a lot. Like, it's good, it's really good, you guys should, but at some point of their life you need to let them go a bit. You need to let them experience things in their life ताकि उनको पता हो कि this is right and this is wrong, this is the right way to do it and this is the wrong way to do it. Recently वाक़या हुआ है कि एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, तो my mother, she is like on call, रो रही है, please take care of yourself, you know, again, because she is, every mom is like that, but extreme possessiveness and pamperness sometimes lead to a bit, you know, tense mahal. I get how you know that is only because they care for us, and because it's important, yaar. We live in a country जहाँ पे you know it's not really safe for us to be out there, and given कि आपकी मामा एक और city में है and then you are in another city, so I think it's only natural कि she feels this way about letting go and all. Like, you should be able to go out there, talk to other people, get all those opportunities, and then avail them as any normal person should have. So right? I made her, you know, मैंने उनको calm down किया, मैंने मामा का मैंने कहा it's okay, calm down, nothing's going on, just relax. So मैं उसी point पे आ रही थी कि like you know, no matter what happens, our parents are always going to be that protective. They're always going to be that protective. They will allow us eventually to go out there, talk to people, and then do whatever, but still there is going to be that call from your mom or whosoever in the family जो पहले से बड़ा भाई या बड़ी बहन या जो भी, and that's still going to go on forever. And I think that's beautiful, because that is beautiful. आपको जब नहीं होते ना, तब आपको एहसास होता है कि यार कोई पूछता होता था. Losing a parent is the most dangerous thing, I would say. Dangerous, why? Dangerous and hurting, because you don't know what world has to offer for you. And when you have a parent, you know that okay, fine, all of a sudden you don't feel so protected. That's you what I feel meant. too exposed. That's true. So एक इन सब के बीच में आई वुड लाइक टू ऐड, ये मुझे अचानक से याद आई है दो, कि जब मैं बच्ची थी, छोटी थी, बेबी थी, आफ्टर माई फादर्स डेथ, इट्स वेरी लाइक आयरॉनिक कह लें या पता नहीं जो भी कह लें, माई भाभी, हु इज़ नाउ माई भाभी एक्चुअली, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड and she still is. Yeah, it's very oh my god, nan bhabhi wala scene. No, my bhabhi, she was and is my best friend. I used to share everything with her. Like, and एक point ऐसा आता था कि my family was like, why do you share everything with her? And I'm like, I just cannot stop myself. Some people just are that way with you. You click and you know you're just easy around them. Right? See, she's like my safe place sometimes. Whenever I know that okay, fine, nobody's gonna understand me, she will. Is it still this way? Yeah, it is still this way. That's so cute. That's so cute. And now I'm living with her. So I just really okay. Nice. So, I just really hope we can all be that person for somebody, right? To be their safe space. To be that person who makes the other person feel at home. Exactly. That's just so important. Like we've talked about this in another podcast as well. We're always talking about how people should be. Right? We should also talk about how we should be with other people, right? Yeah, that's so true. So this is how my childhood was, very happening, kind of. So yeah. Achha, is there something that
some cultural aspect of Gujranwala, maybe that cultural has aspect, remained too very strong. within the Gujranwala there are two cultures. One that is inside the Kent, and second that is outside the Kent. यहाँ पे थोड़ी आर्मी वाली बातें शुरू होने रही थी पहले. The point is कि गुजरांवाला कैंट का ना ये बहुत एक कहने प्लस पॉइंट है कि वहाँ के जो लोग हैं, आई डोंट नो क्या वही लोग बाहर भी सिटी में भी रहते हैं, लेकिन उनकी, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन द टिपिकल among typical Gujranwala के लोग that in a university that is situated in city area, so I know the huge difference between Gujranwala Kent की आवाम and Gujranwala से बाहर की आवाम. ठीक है, you know, जब मैं जाती थी यूनिवर्सिटी मुझे सब कहते थे आप गुजरांवाला कैंट से हैं, like are you from Gujranwala, और मैं उनको बताती भी नहीं थी, and they were, I was like क्या मतलब है, पता चल जाता है. अब जैसे कोई कराची का है, लाहौर का है, you just automatically know. That's a different city, but within the city आप कह रहे हो, so that's a bit odd. तो फिर गुजरांवाला कैंट में ये होता था कि मतलब इवन लाइक आई लिव इन पिंडी, ठीक है, मुझे फिर भी पिंडी के किसी भी कोने से बंदा उठा के लाओ ना और वो मेरे से बात करो, आई नो कि अच्छा ये बंदा इधर का है, स्कीम 3 का है या इधर का है, इतना मुझे नहीं पता चलता. आई कैन टेल, नहीं आई कैन नॉट. तो हम लोगों ने मतलब मैंने अपने बहन भाइयों से सुना है कि दे यूज्ड टू साइकिल विद अदर बाबा के दूसरे कोर्समेट्स के बेटे बेटियाँ, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि ओ माय गॉड लड़के, ओ माय गॉड लड़कियाँ, नो. बट इवेंचुअली व्हेन आई वेंट इन द यूनिवर्सिटी आई वाज, मेरे बहुत से यू कैन से कि 80-20 की रेशो कर लें, मेरे 80% दोस्त लड़के हैं. ठीक है, एंड everyone in the university was like, how are you friends guys, like why are you friends guys, and I was like I don't know, I just click with them. तो मतलब it's like मेरे लिए वो odd नहीं था, पर उन लोगों के लिए बहुत odd था कि यार. I think we should do a separate podcast on like guy friendship with the other gender, you know, and that's how it's gonna be supposed really to be nice. like, yeah, you know, how is it like for us. तो मेरे लिए एक वो बहुत एक गुजरांवाला विद इन द गुजरांवाला रह के बहुत डिफरेंट था. फिर गुजरांवाला कैंट में रहना, फिर वो बातें सुनना कि ओ माय गॉड आप गुजरांवाला कैंट की हैं, आप आर्मी ब्रैट हैं, या जिस तरह यहाँ के इस्लामाबादी स्ट्रीट हो रहे होते हैं ना, गुजरांवाला के लोग गुजरांवाला के बर्गर्स थे तो गुजरांवाला कैंट के सॉरी. तो ये थोड़ा एक था मेरे लिए कि यार ये सही चेंज है. So that was a culture, if you can say that, it was a cultural thing. लेकिन then आपको इस्लामाबाद आके इतना कोई डिफरेंस फील तो नहीं हुआ होगा, because Islamabadi are also burgers. Yeah, Islamabadi are burgers, but they are burger pro, you know. Okay. Yeah, they're beyond burgers. Sorry, but yeah, that's true. Okay. मतलब you can differentiate between Islo people and Gujranwala ke people. So that's you can. Okay. वैसे अब आप लोग सही अपने बचपन की बातें कर रहे हैं, they're thinking a lot कि ओ अच्छा ये हुआ था तो मैंने मुझे याद ही नहीं था. And guys, like I did not think that much in my bachpan. I was a stupid kid, you know. Me doing whatever, जो मिल जाएगा, जो करना है, बस जो दिल कर रहा है वो करना है. हाँ, बचपन में मेरे साथ एक्सीडेंट वाले बहुत से वाक़यात हुए हैं. एक दफ़ा मेरा सर फटा हुआ है, उसका निशान अभी भी है, एंड दैट वाज अ वेरी डेंजरस वाक़या. खैर, माय गॉड. और एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ था, एंड यू वोंट बिलीव, मैं CMH बाईसाइकिल के ऊपर, एक पाँव मेरा एक बाईसाइकिल के ऊपर था, एक पाँव मेरा एक बाईसाइकिल के ऊपर था, और मैं CMH जा रही थी. What? Yeah, because I was bleeding. मेरे चाचा और जो हमारे घर काम करते थे वो और मेरा भाई दोनों साइकिल चलाए थे, मैं बीच में जाके खड़ी होकर जा रही थी. Like that was so I don't know, that doesn't make sense. It doesn't make sense, but it does make sense to me now. मतलब it was like कि दो बंदे मुझे एक बंदी को साइकिल पे CMH लेके जा रहे हैं. Like how? उसके अलावा but yeah, it's just so confused. I'm confused. I was about to tell a story अपनी, but I think nothing tops that because so yeah, it happens. फिर एक दफ़ा मेरा साइकिल में पाँव आया हुआ है, so I have very traumatic experiences with cycles. Okay. Yeah. I've had such experiences as well. Like मुझे याद है एक दफ़ा ना बचपन में I was that बच्चा जो सही होमवर्क टाइम पे करना है, और वो समर वेकेशंस मुझे याद है. You still are that बच्चा. Yeah, you still are actually. But yeah, anyway, so मुझे होता था कि होमवर्क कंप्लीट करना है और हर चीज़ टाइम पर. एंड देन आई हैड दैट, मुझे OCD था
अभी भी है, तब भी था। एंड मुझे बस ये करना होता था कि हर चीज़ काम जो कंप्लीट करना है वो टाइम से पहले कर लेना है, ताकि तसल्ली हो कि ओ यू नो एंग्जाइटी खत्म हो जाए। जैसे आप लोगों ने मुझे ऑफिस में भी देखा होगा, मुझे होता है यहाँ पे कि मैं अपना काम खत्म करके भी शायद बैठ जाऊँ बट काम मेरा हुआ हो, राइट। सो मैं बचपन में भी इस तरह थी, तो मैं क्या करती होती थी कि जो शुरू के समर वेकेशन के दिन होते थे ना, आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट इज़ा, बट आई एम श्योर यू कैन, बिकॉज यहाँ पे समर वेकेशन में ना आपको इतना सारा होमवर्क मिल जाता होता था, जो यू नो वो शीट्स भरनी होती थी, तो हम लोग ना अच्छा मैं क्या करती होती थी कि मैं शुरू के जो 10 दिन है ना उसमें मैंने होमवर्क ख़त्म करना होता था। मैं कहती थी मैं ख़त्म कर लूँ ताकि अगली पूरी छुट्टियाँ मैं बहुत आराम से गुजारूँ। ये काम मैं भी करती होती थी एक बार तसल्ली के लिए गाइस के, ताकि आगे ना हो। अब मैंने क्या किया एक दफ़ा कि मेरा जो स्टडी टेबल था वो मेरे मॉम डैड के कमरे के एक कोने में था, ठीक है। मैं उनके पास सोती होती थी, साथ साइड पे बेड लगा हुआ था। तो अच्छा अब मैंने ना लाइट ऑफ, जब मैं रात को 2-3 बजे तक गाइस काम करी होती थी, एंड 2-3 बजे लाइक ख़त्म किया, लैंप ऑफ किया, एंड देन जब लाइट ऑफ करो ना तो भाग के बेड के पास जाना होता था, बस और कोई लाइट नहीं होती थी, तो वो मैं पाथ बना के ना कि ओ अच्छा अब लाइट ऑफ होगी, लैंप होता था तो मेरा ये होता था कि अच्छा भाग के जो है ना बेड पे जाना है मैंने। सो एक दफ़ा क्या हुआ, आई फॉरगॉट टू सी के नीचे ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है। सो अब क्या सीन हुआ कि वो मैंने लाइट ऑफ किया, एंड आई एम जस्ट लाइक कि वो रेस स्टार्ट होनी है मेरी और मैंने वहाँ पे जाना है, एंड 3 पिन वाला प्लग पड़ा हुआ था वहाँ पे फॉर सम रीजन, ठीक है। आई डोंट नो किसी ने छोड़ दिया होगा यार, अच्छा। और यू नो हाउ प्रेशर से आप भाग के आपको ऐसे लगता है पीछे कोई है आपके। मैं भागी हूँ यार, एंड अचानक से ना वो पूरे 3 पिन्स गाइस मेरे पाँव के अंदर। आई डोंट नो मैंने क्या प्रेशर अप्लाई किया, मैंने क्या किया, बट एनीवे वो अंदर, एंड देन ऑब्वियसली आई स्क्रीम, एंड माय डैड गॉट अप, वो अंदर चीख बाहर। एग्जैक्टली। एंड देन उन्होंने, एंड देन ही टुक इट आउट, लाइक आराम से मुझे बिठा के बेड के ऊपर, एंड देन ही टुक इट आउट लाइक दैट, एंड देन ऑब्वियसली खून निकल आया, एंड मतलब यू नो, एंड देन सिंस यू वर सेइंग कि अगले दिन आपको लेके जा रहे हैं और ये वो हो रहा है, माई पेरेंट्स आउट ऑफ नो वेयर डिसाइड, इतने दिन हो गए हम कहीं नहीं गए कि अब ये हुआ है वर्दा के साथ तो हम अगले दिन मनाली चलते, ठीक है। एंड आई एम जस्ट लाइक कि यार क्या, मतलब पेरेंट्स नेवर केयर दैट मच, देयर ऑल लाइक कोई नहीं बेटा हो जाता है ये वो जैसे। एंड आई एम लाइक ओके फाइन ये वो, एंड देन आई स्टिल रिमेंबर दैट वन थिंग कि वो मैं पाँव यूं करते हुए मैं मनाल गई थी, एंड देन आई वाज इन पेन ऑब्वियसली अ लॉट, एंड देन आई केम बैक होम, एंड देन गर्मियों में आपको पता है कि ख़राब भी हो जाता है आपका जख्म, राइट। सो दैट हैपेंड। सो फॉर मी नाउ ना इट्स लाइक दिस नेचुरल इंस्टिंक्ट कि जब मैं उठती हूँ ना तो इवन इफ आई एम वेयरिंग माई शूज मैं बस देख के उठती हूँ, पता नहीं मतलब एक हो गया ऑब्वियसली मेरे साथ एक सीन हुआ था। ये तो फायदा हो गया आपको। या सो एक ये चीज़ है जो मुझे नहीं भूलती है, अभी भी मेरे पाँव के नीचे उसका एक छोटा सा निशान है। सो या एनीवे, अब मैं अपने बचपन का आप लोगों को, वैसे मैं वही कह रही थी कि लाइक आप लोग बहुत सोच रहे हैं कि अच्छा ये हुआ बचपन में होगा, माई बचपन वॉज लाइक आई डोंट इवन रिमेंबर हाफ ऑफ माई बचपन, राइट। अब मी बीइंग द ओनली चाइल्ड, और मेरे पापा ही वॉज नॉट है, वो जहाँ पे भी शिफ्टिंग होती थी तो मेरे पापा बाय द वे पुलिस में थे, ही हैज़ रिटायर्ड नाउ, तो डिफरेंट जगहों पे उनकी शिफ्टिंग होती थी, एंड ही नेवर टुक अस अलोंग, जो कि मेरा एक गिला होता था उनसे उस टाइम पे कि यू नो you're sort of, मेरे लिए तो दैट वाज लाइक एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, राइट। तो मुझे बड़ा होता था कि हम कहीं नहीं जा रहे, तो रैंडमली ना आई एम सिटिंग इन स्कूल एंड आई एम लाइक कि नहीं आज पापा के पास झेलम जाना है, ठीक है। मेरी जिद शुरू हो जाती थी, एंड देन आई यूज्ड टू गो टू हिम एंड देन कम बैक। में अपने सर पे मैंने कुआरी ली हुई थी अच्छी खासी। सो दैट्स हाउ आई ग्रू अप, राइट। एंड देन at home, me, my mom, my nano, that's it, हम लोग ही होते थे, surrounded by women. Yeah, surrounded by women. That's how I grew up, by the way. So for me, like my role model is my nano, because mashallah she has done so much for the family and all alone. That sort of gives me that hope, courage. Yeah, you know, yeah, and that inspiration to really, you know, अगर कुछ भी हो जाता है ना लाइफ में, I know I can do it, because if she can, I can also do it, right? Women are capable of so much more than we think we are, right? That's true. So yeah, so that's how I grew up. And बाकी तो मेरा सारा बचपन literally guys, like something that you guys did not mention, by the way, cartoons देखते हुए गुजरा। cartoons तो That's because I literally did not have cartoons growing up. What? Oh my god, that's sad. That is very sad. Yeah. लेकिन like मुझे कुछ भी नहीं। Do you know anything about सोन परी, हातिम? Yes. Oh my god. वो मैंने वही देखे हैं। मैंने oh my god, शुक्र है because oh god. शाकला बूम बूम्स, शरारत, हाँ, सोन परी, करिश्मा का। Oh my god, I used to watch it all the time. Oh god. मेरा
हमारा बचपन ही इस तरह गुजरा बिल्कुल, ऐसा ही इनको था। देखते हुए। Thankful for the shows. I guess I like उस वक्त I आप कौन did सा not देखती थी सबसे ज्यादा? सोनपरी actually there was actually मैं देखती थी, I don't know आप लोग किस चैनल पे देखते थे? स्टार प्लस का एक और स्टार आता टाइप होगा, होता था, स्टार उत्सव ऑरेंज था, कलर का, I या, remember। अच्छा तो हमारे पास उत्सव भी था ना वो। उत्सव एक्चुअली वहाँ का ना इन यूए लाइक सीन इस तरह था कि आपको केबल लगवाने पड़ते थे, ठीक है, फॉर योर टीवी। यहाँ पर तो इट्स वेरी कॉमन, लाइक दैट्स द स्टैंडर्ड, राइट। लेकिन यूए में स्टैंडर्ड होता था कि अच्छा सब अपनी डिशेस लगवाते थे, एंड देन लाइक वी यूज्ड टू कैच फ्रीक्वेंसी, और फिर उस लिहाज से हमारे पास चैनल्स आते थे, अच्छा अरेबिक आते थे। Makes it all more special though, आप इतना ज़्यादा मेहनत करके देख रहे हो यार। या तो वहाँ पर आपके पास सैटेलाइट पे ना आपके पास इंडियन चैनल्स आते थे, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट नहीं आते थे, पाकिस्तानी के चंद आद आते थे, लाइक दैट वाज फ्री बेसिकली। लेकिन बाकी के लिए फिर पाकिस्तानी उस टाइम पे आई डोंट थिंक इतना कोई कंटेंट इतना होता common था। नहीं था। एग्जैक्टली पीटीवी आता था, वैसे पीटीवी ही आता था, तो एंड ये और that was- निकलोडियन उस पे क्या होता था, वो जिन वाला कोई होता था। एनक वाला जिन really a part of my childhood वैसे, क्योंकि वो उसके हमारे पास CDs होती थी and I used to watch that. People used to love that. तो फिर ना कार्टून नेटवर्क होता था, ना निकलोडियन होता था, ये वाली चीज़ें होती नहीं थी हमारे पास। लाइक कुछ आज सीरीज होती थी, टॉम एंड जेरी, मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, या टॉम एंड जेरी एंड मिस्टर बीन, एंड ये वाले जो इंडियन होते थे ना, बिकॉज ये चैनल, यही इंडियन चैनल ही हमें एक्सेसिबल होता था। तो एक वहाँ पर बाकायदा इवन एक सेगमेंट होता था, आई डू नॉट रिमेंबर द सेगमेंट, लेकिन आई गेस वो 12 बजे शुरू होता था, तो हम 12 बजे से पहले सारे मॉर्निंग अपने काम कर लेते थे। मुझे याद है कि स्कूल जाने से पहले आई यूज्ड टू वॉच बेबी लूनी टून्स, बेबी लूनी टून्स और एक ड्रैगन टेल्स भी होता था। इतने मजे के कार्टून होते थे यार, आई मिस दोस। I loved watching cartoons or Disney, Hannah Montana. My cartoons and gave me everything. this, guys. So yeah, that's how much मैं टीवी के अंदर घुस के देखती होती थी, and my mom always used to complain कि बेटा पीछे हो जाओ, and I never used to. I was addicted to cartoons. Yeah, so was I. मतलब Brats की सारी series. Oh, Brat. Yeah, Hannah Montana, Brats, Wizards of Waverly, Winx something. Club? Yeah, Winx Club too. Yeah. Oh my God, so many Oh cartoons. God. And then it's sort of sad that now you don't see a lot of kids watching उस तरह से Yeah. cartoons. And also because अब cartoons का for वो some reason standard नहीं है. Honestly, अब cartoons उस They have type के become हैं kind of नहीं. baseless. I don't know. Yeah. Like आप देख रहे होते हो और because आपको समझ लग रही होती है ना कि कार्टून में क्या हो रहा है, तो you're like, what is कोई this? story But I line नहीं also है. feel like maybe पहले ज़्यादा baseless थे and that made it more fun. Maybe now they're not that fun anymore. अब मैं बहुत सारे देखती हूँ तो it's just not fun anymore, guys. I don't know. I know, मतलब बहुत अरसे से मैंने भी बेचारे बच्चे बेचारे बच्चे exactly. बेचारे आज के बच्चे। इसीलिए phones में और कोको But मेलन I में think बहुत do you think the priorities have also changed? Yeah, they like have. people like now people are leaning कि अच्छा YouTube पे जो कार्टून या जो animated हम short बना रहे like that, वो क्या है? Like TV That is is not because हाँ वही ना that much of a access ज़्यादा है ना, priority अब बच्चों को anymore. भी YouTube का ज़्यादा access है than the television, right? exactly. Because बहुत जगहों पे like I know so many people जिन्होंने केबल लगवाई भी नहीं है लेकिन उनके घर टीवी है और उस पे YouTube Smart because TV smart बहुत TV सारे है रहते हैं, हाँ, तो you know that's YouTube है वो the- सब है, so वो देख रहे होते हैं, and then वही same because of the algorithm आप एक दो दफा वो डाल दो बेबी शार्क तो वही बस आता वही आता रहता रहता है। है। Again that's good I think for small babies, लेकिन वो जो हमारे टाइम के कार्टून्स थे ना, like वो I still remember एक Flintstones भी होते Yes, थे, Flintstones, and वो oh God. Jetsons भी, मतलब इतने सारे कार्टून्स जिमी न्यूटन या जिमी न्यूटन, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती थी यार, एंड आई मिस दोज एट टाइम्स। आई एम नॉट गोना लाई, देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं रैंडमली यूट्यूब पे भी आई वुड गो एंड आई वुड सर्च स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स या यू नो Same. फ्लिंटस्टोन्स को एक एपिसोड देखूं। आज अभी भी मैं कभी कभी कार्टून्स देखती हूँ on my YouTube because they are very relaxing भाई. It's like So that was guys my childhood. Cartoons, food, थोड़ी बहुत drawing, थोड़ी बहुत पढ़ाई शढ़ाई, and that's it. Like मेरा तो बचपन और कुछ नहीं Have you guys played those games like Pittu Gol Garam types? Oh yes. No. Oh my God, you have been robbed of all of this exam. You're missing a lot, dude. I still remember सर्दी होती
होती a थी. hoax, living outside is a hoax. I won't call it a stupid game. It was the best game of all time. You know, वो 7 पत्थर जोड़ के you had to, you know. Kish, we used to play Kish Oh, too. इतनी चीजें, इतनी फजूल चीजें होती थी, but I used to all these street games that I don't know. Yeah. And then इतनी बार यार गिरी हूँ उसमें, and then Oh it God, was fun. fun. It was really much It's fun. nice to really remember कि क्या क्या आप कर रहे होते थे, and then it's also sad. It makes you sad कि यार इतना टाइम गुजर गया यार. And now Because actually you have adults. let go of it ना. Like अभी भी अगर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होती तो आपको इतना नॉस्टैल्जिया वगैरह ना फील हो रहा होता, लेकिन it's just that हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है एंड हमने कब से नहीं सोचा, बैठ के सोचते नहीं इसके We're बारे में. finally those people यार जिनको हम देख के कहते थे इनको क्या है, इनका क्यों मूड ऑफ है. And now I'm always like okay, अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है तो I'm just like यार मुझे ना तंग करो यार. I don't have the energy to deal with anything now. ऐसा ही है. So and I still remember बचपन में मैं ऐसे बड़े लोगों को देख के कहती थी इनको like, Why are they so weird and why do they want to go home and they want to I sleep literally used to जल्दी. think इनके they don't have a life. ये क्या बैठ के बातें कर यार रही मैं है वही कह रही हूँ ना कि इस तरह होता है ना यार कि जब कोई 9 बजे सोना चाह रहा है या जब कोई बाहर की चीज को छोड़ के कह रहा है यार घर चलते हैं कुछ, तो आई यूज्ड टू बी लाइक no fun एंड नाउ आई फाइनली अंडरस्टैंड कि आई वुड गो होम 9 o'clock and sleep. I think it's beautiful how हमें पता चल गया कि you know what house is. Now we know the meaning of home. Yeah, home and the people who make it and the space it is and the memories and जो आपको घर में जो comfort मिलता है ना, like home is such a blessing in Do you guys remember those candies जो कि हमें बचपन में बहुत मिलती थी? That spacer one, Spacer, मैं वही that बात करने cola लगी थी. one. And there were also those balls वो जो oh my god sorry Don't tell Izza, these are Pakistani snacks that you probably don't know of and I'm very sorry. एक top ups तो खैर अभी भी होते हैं. Chalky. हाँ Chalky. I used to love Chalky It was my favorite thing ever. Sorry Izza, sorry. आपके क्या snacks थे, आप भी हमें बताएं please. आप अपने snacks बताएं please. Oh God, I miss the chips वहाँ के इतने ज़्यादा. क्या चिप्स होते थे? That was asked in such a funny way कि क्या चिप्स होते थे? बताओ हमें Because जरा. it's like I bet पाकिस्तान को beat नहीं कर सकते and all that. And I agree, हाँ नहीं कर सकते. हमारे snacks the best हो गए. okay, वहाँ पर मसाला फ्लेवर. Oh, मसाला फ्लेवर is a very like new thing. Really? Really? Because like 13 बाहर years के of your लोग नहीं life you करते don't ना. have मसाला, ठीक है? अच्छा मतलब हाँ बाहर नहीं मसाला होता, फ्लेवर लेस में नहीं होता. हाँ. लाइक पाकिस्तान में हर चिप्स का मसाला फ्लेवर एग्जिस्ट हाँ, करते हैं. लाइक yeah. हर चिप्स होता ही मसाला वाला है ना. मैं ना एक basically. टाइम पे बड़ी वीडियोस देखती होती थी जैसे ASMR आजकल चला हुआ है एंड और भी ये जो खाने पीने की आ रही होती थी यूट्यूब पे, तो उसमें ना ऑल दीज एग्जॉटिक स्नैक्स दैट पीपल आर ट्राइंग, उसमें जब भी कोई मसाला फ्लेवर आता था दे यूज्ड टू बी लाइक ओह वाओ लाइक यू नो इट्स गोइंग टू बी सो स्पाइसी बिकॉज़ दे यूज्ड टू बी लाइक कि वहाँ पर नहीं होता ना. या और फिर बाद में यहाँ का जो आपका मसाला होता है लाइक वो चटपटा होता है. हाँ. इट्स नॉट कि वहाँ के चिप्स ब्लैंड होते थे, ठीक है, बट दे हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ spices, yeah. हाँ, बिकॉज जैसे अरेबिक फूड्स, आई लव अरेबिक फूड्स. वैसे अरेबिक फूड्स में ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं होती, तो जो उनकी चिप्स भी होती थी दैट वाज क्वाइट टोन्ड डाउन स्पाइसेस के लिहाज से. तो वहाँ पुफक, माजून, रिपल्स होते थे, एक्सेल होता था. names I don't understand. Yeah, exactly. We only understand churn chutney, guys. But oh, I love ऐसे चूरन चटनी and hajmola candy over here and cola वैसे भी. खैर, but the chips over there वो बहुत अच्छे होते थे. लाइक हम यहाँ पर अगर हमें मौका मिलता है ना, लाइक हमें पता चल रहा होता है कि कोई बाहर से आ रहा होता है और फिर हम कहते थे कि यू नो व्हाट, ब्रिंग इट, लाइक गेट दिस चिप्स, ये वाले चिप्स ला देना. एंड वी आर स्टिल अ फैन ऑफ इट. एंड Pakistanis and their obsession with me included by the way guys, Maggi Oh, I love Maggi. and Knorr ke noodles, like we are I cannot obsessed. survive without noodles. Like they are my comfort food. currently मेरा पता नहीं क्यों जिंदगी में, आई एम सो सॉरी if this offends someone, because बात ही ऐसे weird है कि currently मेरा दिल उठा हुआ है नूडल्स से. happens. It's okay. Like I cannot even taste it. I cannot even eat it. I'm hurt. यार the thing is कि आपकी ज़िंदगी में phases आते हैं. अब जैसे मेरी लाइफ में ना एक phase आता है where I only eat toast and jam.
I love it all of a sudden. And then I'm not a नाश्ता person, guys, by the way. Like I don't like नाश्ता. So I just feel like कि जब भी मैं नाश्ता करती हूँ ना, lazy हो जाती हैं, and then it makes me more hungry throughout the day. So I just don't like नाश्ता. वैसे भी आदत नहीं है, so it doesn't really matter. तो बट मेरे ऊपर एक फेज आता है जब मैं पूरे महीने के लिए रोज टोस्ट खाऊंगी, दिन को भी खाऊंगी, रात को भी खाऊंगी. एंड देन इसी तरह मेरे ऊपर मैगी का आता है कि जब कुछ नहीं है तो अच्छा मैगी अच्छा लगना शुरू हो जाता है. It's the same for me with everything. Like literally थोड़े टाइम बाद I have these phases. So if you're saying कि you hate noodles आजकल, तो makes sense. No, I cannot relate to any of you because मेरे भी phases नहीं आते. But ये कभी नहीं आता मेरे साथ, लेकिन currently पता नहीं just noodles खाया हुआ. I have never had this thing with it. Oh, another thing is कि जो Lay's chips है ना, like KFC is different. KFC tastes different here. McDonald's tastes different here. I don't know if people know this. No, people know this for sure. कि like जगह के साथ ना वो taste भी बदलता है. Lay's here is different and even the flavors here are different. मेरी बात सुनो, like literally आप इधर KFC खाओ और लाहौर में KFC खाओ, उसमें टेस्ट में डिफरेंस है. I've never tried that. I am a foodie, guys, by the way. So एक होता है ना कुछ लोग जिसका कहते हैं ना वाटर ड्रिंकर्स होते हैं, कुछ लोग they know the taste of water everywhere. इसी तरह मुझे for some reason like I eat KFC and McDonald's इतना ज़्यादा कि मुझे I just know, जो डिफरेंस होता है ना थोड़ा सा वो मुझे समझ आ जाता है. So yeah, it is different in multiple cities here as well. आप पूरी कंट्री की बात कर रही हैं. नहीं, like even Lay's के फ्लेवर्स भी वहाँ पर मसाला एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना. मेरी खाला आती है बाहर से ना, तो आई हैव दिस थिंग के मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि मेरे लिए ये ले आए, ये ले, मतलब चॉकलेट्स एंड स्नैक्स और ये और वो ना. तो सो आई कैन रिलेट टू वॉट यू आर सेइंग. लाइक कभी वो मेरे लिए कोई भी चिप्स लेके आती हैं, स्नैक्स लेके आती हैं, तो उनका डिफरेंस इतना ज़्यादा है यहाँ पे. आई स्टिल रिमेंबर मुझे एक कुकीज़ बहुत पसंद है, चिप्स ओहय नाम है उनका, ठीक है. तो आई गेट देम फ्रॉम हेयर एज वेल. इधर मिल जाते हैं कुछ स्टोर्स पे जहाँ पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन लाइक द डिफरेंस इन द टेस्ट, मतलब पाकिस्तान में आके चीज़ पता नहीं क्यों चेंज हो जाती है यार. इवन चीटोस फ्लेमिंग हॉट टेस्ट डिफरेंट. यस लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि कितने वो डिफरेंट है यार. चीटोस फ्लेमिंग हॉट इज सो डिफरेंट. लाइक पाकिस्तान के लाल होते हैं. अच्छा गाइस, व्हाट्स योर लाइक फेवरेट स्नैक? anything spicy. एक बताए ना, tell me one. That is such a That Wow, I don't know. if you guys had a favorite snack, French fries. Go to French fries. I think French fries. If you talk about like packet wala chips, then Kurkure, the red one. I really like them. What about you, Izza? French fries. What is yours? Good question. I'm not really a chips wala person as well. Not even fries? हाँ, no, I do like fries. But ये चिप्स वाली बात से मुझे याद है. लाइक बचपन में जब ये बड़े होते थे, बड़े लोग मतलब ये कह रहे होते थे कि नो आई वोंट ईट चिप्स, लाइक थैंक यू आप लोग खा लो. और फिर मैं कही थी हाउ कैन यू से नो टू चिप्स. मैं भी ऑफेंड होती थी guys. एक तो फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना जो आप घर बनाते हैं, एक जो फ्रेंच फ्राइज आपको बाहर रेडी पे मिलते हैं ना, ओह गॉड, दैट्स सो गुड. टॉप दैट अप. Nothing can top that. Oh, रेडी का concept. That is new. I'm still fascinated कि wow. सड़क पे कहीं भी आप रेडी लगा दो. आपने कभी वो ट्राई किए जो राइस केक्स टाइप्स होते हैं, उनको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, जो मीठे से होते हैं? वर्दा. I love them. उसको उर्दू में क्या कहते हैं? उसको कुछ कहते थे उर्दू में. इज़ा ने बताया था. मैंने नहीं बताया था, मैं तो उनको राइस क्रिस्पीज कहती हूँ. अच्छा, कुछ कहते हैं यार. जो किसी और को पता है तो प्लीज हमें कमेंट में बता दें कि हमें नहीं पता. हाँ, ऐसी चीज़ें. They were nice. Yeah. Still are. But yeah, so I think वैसे overall ना Pakistan is so culturally rich and so many things that make Pakistan. Yeah, things that you always miss even if you go abroad. Yeah. Like that lover you can't forget. Yeah, guys. Exactly. That was really nice. Anyway, do you guys have anything else to say? No, thank you. I just want to say that enjoy your life the way it is, because at some point of your life you're going to grow up and things are going to change and then you're going to miss this.
So you are going to miss it, guys. Like, Avail I miss my every childhood opportunity. so much when I had nothing on my mind, no worries, no tensions. It was just कि यार मेरा सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि आज खाना क्या है Exactly. तो and please, then like, उसमें भी enjoy. options इतने ज़्यादा होते थे, you know. And अब क्या है यार, अब I have so much on my mind कि I miss that Food is time like when kind of the food last was my thing biggest that you'll problem. हाँ. food is kind of now the last thing you'd look on to क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं, you don't get to think Sometimes about you forget to eat. Yeah, That's that's the point we are at Yeah, in our legit. lives, right? So, do you have anything to add, Izza? yeah. I think कि childhood आपको तभी ज़्यादा याद आ रहा होता है because you let go of things, you know. आपको लोग कह रहे होते हैं वो बचपना क्या है तुम में, ये ख़त्म करो and all that. And जब भी मैं कभी सुनती हूँ ना किसी लाइक ग्रोन अप के बारे में कि यार ये अभी भी कार्टून देखते तो ये क्या, अच्छा वो इंसान तब के कोई कह रहा होता है कि ये क्या बचपन है इसका. एंड I think it's so cute and it's so beautiful that someone has this thing जो कि you know something Some that people is hold a on to safe it, space. Yeah, something that is a safe space for them. तो if you have इस तरह की childhood से related ना वो चीज़ें which you do carry on, hold on to, and people around you say कि you know ये बचपना ख़त्म करो. कुछ चीज़ों की वाकई होता है कि आपको बचपना ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ which actually give you happiness, like hold on to them and try making sure कि like they are part of your routine. Yes. And that you don't regret कि why did I stop doing this when this made me so happy. So Yes. yeah, that's it from me. That is a very good ending note. Anyway, guys, so if you can relate to anything that we said today, which I'm sure यार कि मतलब It would be hard to relate to me. I won't be offended. लेकिन if you guys did relate to anything, please let us know in the comments down below. Yeah. We will see you in another episode very soon. Don't forget to like, subscribe and share it with all your friends. We'll see you soon. Allah Hafiz. Bye. Allah Hafiz.